और इस वक्त राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे चलते हैं। That we have no record of any of these people. We have no record of these 700 people. As it turns out, we did some homework and we have 403 people who the government of Punjab has compensated 5 lakh rupees each and has given jobs to. 100 and how many people have given jobs? 152. 152 have been given a job. We also have another list, which is this one, where we have 100 names of other people not in Punjab, from other states, and there is a third list which is public information of names, addresses, phone numbers, which can easily be verified. So this list exists, but the government insists on saying that such a list does not exist. What is the purpose? These people have died as a result of the agitation. We are not talking about billions of dollars, thousands of crores of rupees. We are talking about minimum compensation for the sacrifice they have made. Prime Minister himself has said that he has made a mistake. He has apologized to the nation. Well, as a result of that mistake, 700 people have died. Now you are lying about their names. Why? Why don't you have the decency to give them what is their due? The government of India should pay their compensation and help these families. Thank you, sir. We'll begin with ANI, Siddharth. Sorry. Yeah. उस पर भी सरकार अभी तक जो है चुप है। विपक्ष किस तरीके से इस बात को करना मेरा कहना है कि जो 2-3 सबसे बड़े उद्योगपति प्रधानमंत्री के और सरकार के जो मित्र हैं, उनके लिए ये कुछ भी कर देते हैं। जो भी करना होता है वो कर देते हैं, मगर जब किसान को जरूरत होती है, मजदूर को जरूरत होती है, तो कहते हैं ये तो है ही नहीं लोग। मतलब उनका कहना है कि ये 700 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई, ये तो है ही नहीं। तो किसानों की मांगे हैं। हमने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम उनकी मांगों का समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मगर ये मिनिमम कॉम्पनसेशन जो है, ये तो मतलब मिनिमम रिस्पेक्ट की बात है। तो ये तो इनको एकदम कर देना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है, माफी मांगी है। किससे माफी मांगी? क्यों माफी मांगी? क्योंकि उन्होंने ये गलत कानून लागू करने की कोशिश की, उसके कारण 700 लोग मारे गए। तो आप एक तरफ कह रहे हो मैं माफी मांग रहा हूं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि जो 700 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई, ये तो, और लिस्ट पंजाब सरकार के पास है, बाकी लिस्ट यहां पड़ी हुई है, नाम ले दीजिए आप मतलब फोन नंबर भी है। प्राइम मिनिस्टर अगर डायरेक्टली कॉल करके चेक करना चाहें, मैं नाम भी बता देता हूं 2-3, तेज कौर, गुरजंत सिंह, दाना सिंह, दर्शन सिंह, फोन कर ले कि ये है या नहीं है, पता लग जाएगा। थैंक यू सर। विल PTI. Look, frankly, the Punjab government is not responsible for the deaths of these people. It was not our responsibility. However, we have given them support, 5 lakhs each. Why? Because we understand that they're going through a difficult time, right? We have also given 152 of them jobs. We intend to give the bulk of them jobs. So we have already acted on it. Frankly, it is not our responsibility
It is not our mistake that has caused this. It is the Prime Minister's personal mistake which he has accepted. So why does he not have the dignity to turn around and say, okay, 700 people have died, I will compensate them? What is the problem? It's not a big amount for the government of India, right? It's the same with COVID. Millions of people have died of COVID. You don't report them as COVID deaths. You report them as something else, right? Official figure in Gujarat, COVID is what, 10,000? Official figure in Gujarat is 10,000, right? We have sent our workers to all the villages in Gujarat. We've asked in every specific village how many people have died. Do you know what the number comes out to be? 3 lakh people have died in Gujarat. That's the fact, right? So you simply do not want to accept that people have died. When it is not their fault, it is not the fault of the people who died in corona, कि उनको आपने सिलेंडर नहीं दिया, आपने उनको अस्पताल में पलंग नहीं दिया, उनकी गलती तो नहीं थी। किसानों को आपने स्वयं कहा कि मैंने गलत कानून लागू कर दिया। आप कह रहे हो कि हाँ मेरी गलती थी, फिर आप कह रहे हो कोई मरा ही नहीं। This is not the way the Prime Minister of India should be behaving. This is a very unpleasant, immoral, and cowardly way to behave. Thank you, sir. I'll come to you. Supriya from Aaj Tak. I don't know. I mean, frankly, I don't understand what is the big issue in paying these people compensation. We are doing it. What is the big issue? It is, you are so insensitive that you don't understand the pain of these families. They are today facing an environment where there is huge joblessness. You have not let them work for 1 year. You have taken away their livelihood. Now you are saying to them, you don't exist. आप हो ही नहीं. I mean, I think depending on how severe this variant is, I don't know that. I mean, I'm hearing contrary things. I'm hearing that, of course, everyone knows it spreads much faster than Delta variant, but it's not clear on how severe it is. So depending on how severe it is a potentially very dangerous thing. I think also it's important that we think clearly about our vaccine strategy, because what I'm hearing is that the current vaccines are not necessarily working with this variant. So we have to be careful on how we are thinking about vaccinating, and also get ready to accept that we might have to vaccinate everybody else again for this variant with a new booster. Kumar Vikrant from TV9. जिस तरीके से सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि पैसा नहीं है इस वक्त में, अर्थव्यवस्था खराब दौर से गुजर रही है, तो ऐसे में एमएसपी दिलाना मुश्किल है, कंपनसेशन दिलाना मुश्किल है, इस पर आपकी क्या राय है? पैसा किसके पास नहीं है? पैसा किसानों के पास नहीं है। सरकार के पास क्यों नहीं है पैसा? मतलब लाखों करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल से ले रहे हैं, क्या वो मतलब आपको मिल रहा है क्या? आपको तो नहीं मिल रहा, किसानों को तो नहीं मिल रहा, तो कहां जा रहा है वो? ऐसी तो कोई बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब भी गरीबों की बात उठती है, किसानों की, मजदूरों की, तो आप कहते हो पैसा नहीं है। और जब आपके मतलब 3-4 क्रोनी कैपिटलिस्ट, पूंजीपति फ्रेंड्स, मित्रों की बात उठती है, तो फिर पैसे की कोई कमी नहीं होती। Thank you, sir.
We'll have Last one. Ashish from ABP. Yes, ma'am, we will have. राहुल जी मेरा सवाल थोड़ा सा फर्क है अभी कल हमारी रिलेट्स हुआ पैटर्निटी पार्लियामेंट की कवरेजेस में जो जर्नलिस्टों को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है आपको पता होगा लोकसभा एक राज्यसभा एक कल जर्नलिस्टों ने इसको लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट भी किया व्हाट इज योर व्यू इन दिस क्योंकि इसमें हमें लोकसभा स्पीकर की तरफ से एश्योरेंस भी मिला था कि इस बार उसको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा लेकिन वो भी नहीं किया No, I mean, I think the press should have access, certainly to Parliament. I think it's important. That's pretty clear कि नहीं हो रहा है. I mean, और वो शायद होगा भी नहीं. But ये न्यू इंडिया है.